हाय बच्चों, आप लोगों को जेई फिजिक्स में इजी यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाला है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे वीडियोस अपलोड होती ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो आज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 5.5 न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मोमेंटम डिस्कस किया है हम लोग। आज न्यूटन्स सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ डिस्कस कर रहा है। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and it takes the direction of applied force, So this is the statement of second law. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes the direction of applied force. ठीक है, तो यही है statement. Suppose a force is applied on a body. Suppose F is applied for a time interval of delta t on the mass of m. So इसका velocity v suppose. So यहाँ ये v plus delta v हो गया, the velocity change from v to v plus delta v. ठीक है, so the momentum will change. The change in momentum will be delta p is equal to m delta v हो जाएगा। अगर ये वेक्टोरियल नोटेशन में ले लेंगे तो ये वेक्टोरियल नोटेशन में ऐसा होगा। ठीक है, so v became v plus delta v. So what is the definition of second law? What is the statement of second law? F is proportional to delta p by delta t. Okay, this is the statement. So अगर proportionality निकालेंगे तो F is equal to k into delta p by delta t. ठीक है, now if we apply delta t tends to 0, F bar is equal to k into delta p. Limit delta t tends to 0, delta p by delta t, then this will become k into dp by dt. This is the equation it will become. ठीक है, so on a mass m, if a force is applied for an interval of delta t, the change in velocity is from v to v plus delta v. Then change in momentum will be delta p is equal to m into delta v. ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है तो ये भी कर सकते हो। p1 is equal to mv and p2 is equal to m into v plus delta v लिख सकते हो। तो p2 minus p1 हो जाएगा, p2 minus p1 ये कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। तो द चेंज इन मोमेंटम इज मास टाइम्स ऑफ डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी. सो F is proportional to rate of change of momentum delta p by delta t. प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाल दिया तो
इक्वालिटी ले लेंगे तो सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे। तो सपोज अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो in a small interval means that interval tends to zero, then delta t tends to zero. Delta p by delta t will become differential coefficient. So f is equal to k into dp by dt. Okay. So now what we can say is, if for a fixed mass, if m is constant, then dp by dt is equal to d of mv by dt. M is constant, so m into dv by dt. This is equal to m into a. Okay. So dp by dt is equal to m into a हो गया है, ठीक है। Acceleration direction will be p direction will be there, a direction, a also vectorial quantity, ठीक है। तो ये हो गया। अगर m कांस्टेंट है तो दिस इज करेक्ट, इफ m इज नॉट कांस्टेंट, फिक्स्ड मास नहीं है तो ये करेक्ट नहीं है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई दिस, f इज इक्वल टू k dp by dt, this is equal to k into ma. So proportionality constant can be taken any value. So for simplicity, if फोर्स डिफाइन नहीं किया है इसलिए k को हम एज्यूम कर सकते हैं, k इज इक्वल टू अगर 1 ले लेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ 1 kg, दैट इज नोन एज 1 यूनिट ऑफ फोर्स। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स कितना है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा न्यूटन। सो न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट, और एस न्यूटन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। डायमेंशंस को करने के समय पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये है। सो नाउ वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन। न्यूटन सेकंड लॉ अभी मैथमेटिकली एफ इज इक्वल टू ma वी कैन राइट। इन फर्स्ट केस एफ इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज m कैनॉट बी 0, सो a इज इक्वल टू 0। दिस इज कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है विथ फर्स्ट लॉ, ठीक है। So this is the first point I am writing, first law, this is consistent. So external force 0 है तो acceleration 0, अगर acceleration 0 है तो net force 0, ठीक है। तो second case क्या बोला था हम लोगों को, तो this is an vectorial equation you can replace with equivalent, so in component form, this is vector form, ठीक है। ये vector form में force का equation। अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सो कंपोनेंट फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। एम ए एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं dpx by dt, similarly dpy by dt, may fz is equal to maz और dpz by dt, ठीक है। ये कंपोनेंट फॉर्म में तीन इक्वेशंस हो जाएंगे, इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस। 1 डायमेंशनल है तो एक इक्वेशन यूज करेंगे, 2 डायमेंशनल है तो 2 इक्वेशन यूज करेंगे, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 इक्वेशंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं जनरली, एक्स वाई जेड का एफ का वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कोई भी पूछ रहा है, ठीक है। तो मास भी दे रहा है, तो ये नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल के लिए हमने बताया, एक ही पार्टिकल लेके बताया था।
So system of particles के लिए भी this is applicable, but there it will be F external is equal to m a center of mass हो जाएगा. This is the equation. ठीक है. For system of particles, this is applicable for system of particles also. Okay, system of particles. ये equation फॉर्म में हो जाएगा. थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, कहीं भी अगर बॉडी यहाँ है तो कहीं भी जा रहा तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एफ बोले तो एफ एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये बोले तो एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. दिस इज ए लोकल रिलेशन, मीन्स इंस्टेंटेनियस ओनली. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली इट इज एप्लीकेबल, नॉट एवरीवेयर. दिस डजंट डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस, प्रीवियस का क्या है, आगे भी क्या होगा ये भी नहीं है. एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली यू आर इंटरेस्टेड एंड this relation is applicable at that particular instant of time. Force is at that particular instant, acceleration is at that particular instant of time. ठीक है. Acceleration may be in this direction, may be in this direction also. At that particular instant of time, the resultant acceleration, resultant force ये भी बोल सकते हो. ठीक है. तो net relation भी बोल सकते हैं. These are the 4 points we are interested. Next is in this particular topic 5.5 only, impulse is there. Impulse. What is impulse or impulsive force क्या है? Suppose if we are hitting a ball with a bat in a short duration of time, so it will change its momentum. Okay, so you can write average force. So F is equal to delta P by delta T you can write. So F into delta T can be written as delta P, change in momentum. This is known as F into delta T is known as impulse. Okay, this is I is equal to F into delta T. This is average force basically. So for finding the force and the duration of the time is very small here. Force is maximum, small time interval, large force and small time interval. But we can measure the change in momentum in this rather than finding the time interval or something like that. So this will be equal to change in momentum also. Impulse. Change in momentum. Okay. Impulse is also a vector quantity. ठीक है. So this you should remember. Suppose if you are having a graph between f versus time, whatever may be the graph, the area under the curve will represent in this time interval is I. I is equal to ft. Area under the curve. Impulse also. Force versus time graph दिया तो area under the curve is nothing but impulse. ये भी ध्यान में रख लीजिएगा. इससे 5.5 न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन हो गया है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.